This is to the base E. क्या हुआ लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास में नहीं आई थी तुम? अच्छा, पूरा एक बुक नोटबुक कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको सोचो. दिस इज अल्फा टू द अल्फा लॉग इट 4 टू द बेस. हाँ, कैसे हो जाएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स का? उसमें तो अलजेब्रिक एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है. लॉग 4 टू द बेस ई है, वो अल्फा है. लोअर लिमिट अल्फा है. ई टू द पावर एक्स माइनस वन. ई टू द पावर एक्स माइनस वन है ना, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं नहीं, वो एक्स है. इंटीग्रेशन अगर अल्फा होगा तो फिर तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो कांस्टेंट है. क्या करना चाहिए? थिंक ऑफ रूट हट जाए. कैसे रूट हटेगा? ई टू द पावर एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर ले लो, या तो या कुछ कॉमन लेके कुछ हो सकता है, तो वैसे कुछ करो. बट आई थिंक वी कैन स्टार्ट लाइक दिस ऑल्सो, ताकि रूट हट जाए. स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज. जानवी, जायना, जायना, अर्शिया, अनुज. चेंज द लिमिट्स ऑल्सो. लिमिट चेंज भी करोगे ना? सी व्हेन आई सब्स्टिट्यूट, this will be e to the power x dx is equal to 2t dt, right? So dx will be 2t dt divided by e to the power x, which is 1 plus t square. At the same time, I need to change the limit also. When x is alpha, the new limit would be alpha minus, no, e to the power alpha minus 1, no? Or else we can change limits later also, no? We can substitute back the same limit. Don't change the limit. वैसे कर लेते हैं. So I'm not writing a limit at the moment. So it's 2t by 1 plus t square dt. And this is under root of t square. Now you integrate it and substitute back in terms of x. t से t कट रहा है ना, नीचे भी t आएगा बस. और फिर इसके बाद कैंसिल करके, यू नो दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला. पार्टनर का है तुम्हारी? पार्टनर तो 1 महीने से नहीं आ रही. तुम्हें भी उसी का रोग लग गया है. It is 2 out dt by 1 plus t square. This is 2 tan inverse t, right? T is e to the power x minus 1. Now you can put limit. No, I'm not writing. I'm just, sorry, root of. Root of e to the power x minus 1. So this is
2 out tan inverse under root of e to the power x. So e to the power log 4 to the base e minus 1. You know that e to the power log fx to the base e is always fx. बताया था ना ये? Minus tan inverse under root of e to the power alpha minus 1. So this would be 2 into tan in, this will become 4. This will be 4. 4 minus 1, root 3. Tan inverse root 3. And this is tan inverse e to the power alpha minus 1 is equal to pi by 6. Simplify it further. Tan inverse root 3 is pi by 3. This 2 you can get other side. Pi by 12. So pi by 3 minus pi by 12 is equal to tan inverse root of e to the power alpha minus 1. So this is 3 pi by 12. Pi by 4. Tan pi by 4, bring tan this side, is this. E to the power alpha is 2. Okay, Ryan. Then you can find product of root. E to the power alpha is 2. E to the power minus alpha would be reciprocal 1 by 2. Sum of roots would be 2 plus 1 by 2, that is 5 by 2. Product of root would be how much? 1. So you know how to form a quadratic if you know sum of roots and product of roots. क्या था? If you have to form equation, it is x square minus p sx plus p is equal to 0. So your answer would be x square minus 5 by 2x plus p. See, from this only you can identify if they are reciprocal roots. So the product of root has to be 1. So c should be equal to a. So this option will be ruled. Two options are ruled out. Whenever a quadratic has c is equal to a, only then roots are reciprocal. This cannot be the answer. This cannot be the answer. And even this cannot be the answer. This question we would have answered without solving. हमने टाइम वेस्ट किया अननेसेसरी 5 मिनट्स बट एनीवे इंटीग्रेशन आ गया तुम्हें जब भी रूट रेसिप्रोकल होते हैं व्हेनेवर रूट्स आर रेसिप्रोकल सी इक्वल टू ए होता है बिकॉज प्रोडक्ट इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whenever product is 1 or vice versa, c is equal to a because product of root is c by a. So since the roots were reciprocal, a should be equal to c. Only one option has a equal to c. So there was no need for solving it. C में कैसे आ रहा है? तो बहुत घटिया मतलब बहुत बैडली फ्रेम्ड ऑप्शन थे इसके क्वेश्चन इज गुड बट फ्रेम नहीं किया ना सही एटलीस्ट कम से कम दो ऑप्शन में सेम होना चाहिए था सी इक्वल टू है विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस व्हिच यू कैन आंसर विदाउट सॉल्विंग बट इंटीग्रेशन वाज गुड
the value of integral 0 to pi by 4 x dx divided by sine to the power 4 into 2x cos to the power 4 of 2x is. The limits are 0 to a. So if you can apply some, property, you can do that, or you can do it directly also. प्रॉपर्टी से बताना. So you can start with the let the question equal to be I. Apply the property because you have x also. So you can apply the property 0 to a wala, Use that first, add them up. भूल कैसे गए इतनी जल्दी? तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, एक्स कट जाएगा, पाई बाय 4 बाहर टेक आउट. हाँ ठीक है. सो अप्लाई द प्रॉपर्टी 0 टू ए. Call it equation number 1. With the, it will work wherever you have x, replace it by pi by 4 minus x whole to the power 4. Cos 2 into pi by 4. Wherever you have x, replace it by a minus x. Now this will be sin pi by 2 minus x. Sin pi by 2 minus x would be cos. Sin pi by 2 minus 2x will be cos. This would be cos pi by 2 minus 2x will be sin.
So now notice that one equation number 1 and 2 have the same denominator. Add the add these two. Add करो. Then pi 2 into x की जगह pi by 4 minus x. 2 नहीं होगा क्या? ये 2 किया तो pi by 2 minus 2x नहीं होगा. You're not dividing, multiply कर रही हो. Now what? ठीक है. After adding equation 1 and 2, after adding 1 with 2 क्या आ रहा है? 2i on the left side. Right side में you can add up the two integrals. X plus pi by 4 minus x, because denominator is the same. Sin 2x to the power 4 cos 2x to the power 4 dx. ये कट गया. So 2i is equal to pi by 4 integral 0 to pi by 4 dx divided by sin 2x to the power 4 cos 2x to the power 4. Now what? cos 4 से डिवाइड कर देंगे, cos Cos, के पास 4। yes, you can divide by cos 2x to the power 4. Dividing numerator and denominator by cos 2x to the power 4. Do that. And then substitute tan 2x equal to t. After that, उसके बाद उसके बाद उसके बाद नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर लो ना. Divide by cos 2x to the power 4 numerator and denominator. Dividing by cos to the power cos 2x to the power 4. Divide numerator and denominator by cos 2x to the power 4. ऊपर नीचे डिवाइड करो. पाई है ना ये. उसके बाद tan आ गया ना. tan को फिर substitute tan 2x as t. And then numerator you have sec to the power 4. Sec 2x to the power 4 आएगा numerator में. इसको ब्रेक कर लेना. इसको and where is this gone? +1 आएगा ना. Dividing numerator and denominator cos 2x to the power 4 will give you I is equal to pi by 8, 0 to pi by 4. This would be sec to the power 4 of 2x. This would be tan 2x to the power 4 plus 1 dx. Now, numerator में you break sec 4. 1 sec square you can write as 1 plus tan square 2x. Another will become the part of the integral. Now substitute tan 2x is equal to tan 2x is equal to t. Tan 2x is equal to t. So 2 into sec square 2x dx is equal to dt. And the limits will change. When t is 0, when x is 0, t will be 0. And when x is pi by 4, t would be, when you substitute, t would be infinity. Because tan pi by 2 is infinity. Right? These are the limits. So this question is now integral I is equal to pi by 8, 1 plus t square, sec square 2x dx is dt by 2, and the denominator is 1 plus t to the power 4. You know how to answer this question. ये हमने किया हुआ है. Any idea? Anyone? How to answer 1 plus t square by 1 plus t to the power 4?
हाँ, ऊपर वाला। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। लॉन्ग डिविजन तब करते हैं when the power of numerator is more. Dividing numerator and denominator by t square. Not necessary. उससे फर्क नहीं पड़ेगा. So this is I is equal to pi by 16 and dividing numerator and denominator by t square. So 1 by t square plus 1 dt divided by 1 by t square plus t square. Another substitution now. Y is equal to t minus 1 by t. एक और substitution करना है. Because when you differentiate this, numerator is derivative of this. Numerator is derivative of t minus 1 by t. एक और substitution करना है. Square करो इसको. Square करोगे तो क्या आएगा? Y square is equal to t square 1 plus t square minus 2. So y square plus 2 will be the denominator. So the question will reduce to I is equal to pi by 16. Now you can see I'm not changing limit. Numerator is dy and denominator is y square plus 2, which I can write root 2 whole square. Hmm. क्या आंसर आ रहा है? नॉट डिफाइंड हो गया तो कुछ गड़बड़ की होगी. 2x कहाँ गया तुम्हारा? एंगल वॉज 2x ना. साइन टू द पावर 4 2x cos 2. उसके बाद क्या किया? So this is tan inverse. So pi by 16. Tan inverse is 1 by a. Tan inverse y by root 2. I'm replacing y. Y is t minus 1 by t. Now the limits of t 0 to infinity. One by infinity 0. So when you substitute upper limit, it will be tan inverse infinity. When you substitute 0, it will be tan inverse minus infinity. 1 by 0 is infinity also. लोअर लिमिट भी तो डालोगी ना. ये वाली लिमिट डालो. जब ये डालोगे तो आएगा 1 by 0. तो विल बी tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी. विल बी minus pi by 2. So when I substitute limit pi divided by 16 root 2, tan inverse infinity is pi by 2 minus tan inverse minus infinity, which will be minus pi by 2. So pi by 2 minus minus plus pi by 2, which is pi. So pi square by 32 root 2. पाँच पे 16√2 नहीं रहेगा? Oh, हाँ. 16 root 2, sorry. So which answer? C. Hmm? So long questions. So questions are pretty lengthy in JEE nowadays. They are easy, but they're not difficult, but they're lengthy. So you make calculation mistakes somewhere in between. इसका एक बार दोबारा से देख लो शुरू से लेके क्या किया हमने. हमने ऐसे बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं. कौन सा? tan इनवर्स का भी फॉर्मूला भूल गई क्या? पेन दो. इंडेफिनिट तुमने किया है ना सारा. फिर तो
this is, so that's why root 2 1 by a. किसमें इसमें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय रूट 2 तो इन्फिनिटी हो गया ना. Mm-hmm. You put the limit. So this is infinity. Minus 1 by infinity would be 0 by root 2. So infinity by root 2 is infinity. Then you substitute 0. Then 1 by 0 is infinity. By root 2 will be. Right? हो गया? This concept is used many times. Dividing numerator and denominator by t square. Arshia done? Anuj? Got it? Zaina? Ren? Yes, sir. Done? Remember that whenever you integrate sin x or cos x for one complete loop, this area is how much? Anyone? This is 1. This will be 2. Integrations of sin x 0 to pi is 2. One loop has area equal to 2 units. It is mod sin x. See, there's one property. If you have a function in such a way that f of x plus t is fx, इसका मतलब t क्या हो गया? t उसका फंक्शन का पीरियड हो गया, राइट? तो 0 to mt, where t is the period of a function, dx is always m times 0 to t fx dx. You can note it down. Also, if you have nt to mt fx dx, it would be m minus n 0 to t fx dx. लिख लो ये. तो अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो वी कैन ऑलवेज यूज दिस. तो मॉड साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है. मॉड साइन का पीरियड कितना होगा? किया हुआ है हम लोगों ने. इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स, कैसा ग्राफ बनेगा? इल बी द नेगेटिव पार्ट विल फ्लिप ओवर. So the graph is repeating after pi. The period of this function is pi. So I can write it 10, 0 to pi,
Sin x dx, right? I'm using this property. Period of mod sin x is pi. And this is how much? 0 to pi is how much? I just did it over here. 0 to pi is 2. So it will be 10 into 2. So integration of one loop of sin x is 2 units. Hmm? Area 0 to pi. Sin x, integral of sin x 0 to pi is 2. इसको याद कर लो. See, the moment you see the limit minus a to a, that means you need to apply odd even. If that doesn't work, then you do something else. So first you identify whether the function is odd or not. If the function is odd, answer would be 0. Minus a to a, odd function, it is always 0. If it's not odd, it could be even. Then it will be 0 to 2, 2 times 0 to a. But if it's neither, then you do something else. तो क्या फंक्शन ऑड है? Even. F of x is 2x 1 plus sin x over 1 plus cos square x. So if you replace x by minus x, it is minus 2x 1 minus sin x over 1 plus cos square x. So here f of minus x is not equal to fx. That is, it is not even. F of minus x is not equal to minus fx. It's not odd also. Neither even nor odd. Apply other property. A to B वाला property apply करो. ये वाला कैसे लग सकता था इसमें? इंटीग्रेशन तो आया था ना इस बार. फिर डेफिनेट भी आया था. हो गया था. तो तुमने किए थे क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन. तुमने क्लास में किए हुए हैं क्वेश्चन. इंडेफिनेट तुमने पूरा किया था. डेफिनेट भी. So apply property A to B. Replace x by a plus b minus x. Or even
हम्म So minus 2x and plus 2x cancels out. And then again, see what kind of function is this. So have you added all of you? 1 plus 2. 1 plus 2 gives us, since denominator same hai, limit same hai, so we can add. It is 2x plus 2x sine x. This is minus 2x plus 2x sine x over 1 plus cos square x. Abhi bhi problem is there, like we have algebraic function, we have trigonometric function. It's a combination of two functions. It's difficult to integrate. You can't integrate just like that. So 4 minus pi to pi x sine x 1 plus cos square x. Again, ask yourself, now this function is even or odd? x को वापस माइनस एक्स से रिप्लेस करो, दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन होता है, तो अभी इवन फंक्शन हो गया। ये अब इवन फंक्शन है, एक्स को जगह माइनस एक्स डालोगे, साइन एक्स में माइनस एक्स डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में क्या करते हैं? इफ यू हैव माइनस ए टू ए even function, it is 2 times 0 to a. Apply this property. So this would be 8 0 to pi x sine x by 1 plus cos square x. Now we have our best property, which is 0 to a. Now you apply 0 to a because x and sin x are there. अब 0 to a अप्लाई करो, फिर ऐड करो इसको, ये ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली ना, ये 2 से 2 काट दो, 4 काट दो, इसको इक्वेशन 3 ले लो, 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाओ, 3 और 4 को वापस ऐड करो। 2 से 8 काटो, इसको 3 ले लो, वापस ऐड कर लेना। आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी अगेन ऐड। लेफ्ट में क्या लिखा है? आई, लिखो आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 3 3 3। अप्लाई 0 टू वाला प्रॉपर्टी, 0 टू ए, बिकॉज लिमिट अब 0 होगी ना, लोअर लिमिट लिखा था मैंने, हाँ सबसे पहले ही वाला। इसमें क्या करोगे? एक्स की जगह पाई माइनस एवरीवेयर, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? हाँ, देन यू ऐड अगेन, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेना। So since lower limit is 0, again we apply the property. Once you apply the property, it would be I and 0 to pi, wherever you have x, replace it by a minus x, pi minus x. Sin pi minus x is sin x. Cos pi minus x is minus cos x, but its squares will be positive. Right? Now add 3 and 4. So after adding 3 with 4, we'll get 2i is equal to 4 times, denominator is the same, pi minus x plus x into sin x divided by 1 plus cos square x. See? Easy question but lengthy question. उसके बाद it's so simple. उसके बाद क्या करना है? क्या सब्स्टिट्यूशन? नहीं, sin x इसका डेरिवेटिव है, cos का, सिर्फ cos को t डालोगे, 1 प्लस cos स्क्वायर में तो अगेन cos x भी आएगा, उसका क्या करोगे? cos x को t सब्स्टिट्यूट करो,
ऐड करने के बाद x कट जाएगा, टेक पाई आउट, cos x को t डाल दो, tan इनवर्स -1 बड़ी -π/4 आ रहा है। दिस टर्म विल कैंसिल, ये वाला x वाला ना, पाई टेक बाहर ले लेना, फिर सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है। रायन क्या आंसर आ रहा है? So I got pi square. ओके। अर्शिया, व्हाट्स योर आंसर? रेन, व्हाट्स योर आंसर? अभी निकाल रही हूँ। Now the substitution is cos x is equal to t. So if you want to change limit, you can change. Otherwise, you can, later substitute. So minus sin x dx is equal to dt. So 2 pi, and this is minus dt by 1 plus t square. So this is minus 2 pi tan inverse t. T is cos x. So I put the original limit 0 to pi. So minus 2 pi tan inverse cos pi. Cos pi is -1 and cos 0 is 1. And you know this, that tan inverse of minus x is minus tan inverse x, right? So it will be minus π/4 minus π/4. So minus 2 pi into minus π/2. Left side was 2i, is it? अच्छा, cancel, ठीक है। तो I is equal to pi square. Since JEE maths is very difficult to earn 4 marks. It's difficult. Lot of hard work. हर स्टेप पे देखना होता है. What is a difficult question, but it was lengthy. अगर ऊपर sin x cos x होता तो would have substituted 1 plus cos square x is t. Right? Tan inverse -1 माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस tan inverse 1 π/4. tan inverse 1 π/4 होता ही है. क्या क्वेश्चन आया?
and apply properties. And see, यहाँ पे limit is 0 to pi by 2, whereas this is pi. So you might have to use, limit change formula also. If you recall, we did this 0 to 2a, fx dx is twice 0 to a, fx dx, if and only if f of 2a minus x is fx. So you start from left side. Let I is equal to 0 to pi x f of sin x dx. You can apply property 0 to a. Lower limit 0 है ना? So apply the property 0 to a. देखना पड़ेगा. हम्म हो गया. हाँ, now 0 to 2 वाली प्रॉपर्टी यूज करो because you have limit pi by 2 there. तो 0 to a वाला प्रॉपर्टी यूज किया. So this is because I need to get rid of x. यहाँ पे x नहीं है. तो wherever you have x, replace it by pi minus x. So this is 0 to pi minus x f of sin x. Sin pi minus theta is sin theta. Adding 1 and 2 will be 2i. Limits are 0 to pi x f of sin x. Open this. Pi f of sin x minus x f of sin x dx. ये कट गया. So at least we got rid of pi x, sorry. After this, can we apply this property? वो right side में limit 0 से pi by 2 है. So basically we can apply this property because pi को I take 2 into pi by 2 and this condition is satisfied. Sin pi minus x is sin x. So I can use this condition. I can bring 2 over here. So this would be 2 pi 0 to pi by 2 f of sin x dx, which is equal to 2i. 2 and 2 cuts. Now you can compare this with the right side. A is pi. इसको कंपेयर करो. ये i है इसके साथ. चेक कर लो.
ठीक है. So you can start with I. Apply property, whichever. I think it's yeah, 0 to pi. You can apply 0 to a wala property. जीरो टू अप्लाई करो, ऐड करो. ये डिफरेंट है ये. Now can you apply this property? 0 to 2a वाला. हाँ, फिर सी which is the answer. फिर इसका मतलब you do something else. I is apply the property 0 to a. Sin pi minus x. So 0 to pi minus x f of sin x, right? Add 1 and 2. So when I add 1 into it's 2i, 0 to pi, and you have x f of sin x plus pi minus x f of sin x, right? So this will cancel out. So 2i is equal to pi, 0 to pi f of sin x dx, which is not the option. No option is this.
सी इज नॉट दिस, सी में लिमिट 0 to π/2 है. तो डी. Now you apply that property. So 2i, f of sin x is f of pi minus sin x. We can apply that property. This 2 will come over here. Will become 0 to π/2 f of sin x dx. 2 and 2 cuts. Now, is this the option? Again, this option is not there. Again, you apply 0 to y. And you get your answer. You apply 0 to a. So sin π/2 minus x is cos x. So the answer is D. Earlier we were saying answer is C, but C is not the answer. D is the answer. तो ऑप्शन को देख के आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है. ये 8 है. कोई प्रॉपर्टी लग रही है इसमें? प्रॉपर्टी से कोई फायदा हो रहा है? 0 to a लगा के देखो, कुछ नहीं हो रहा ना. हाँ, बहुत जोर से. 8 तो कांस्टेंट है. उसके बाद आई ले लो इसको, 8 बाहर निकाल दो.
अब पहले अगर if you apply a plus x, will it help? No, it won't help. So think of some substitution. x को क्या substitute करें ताकि denominator reduce हो जाए? x को sin theta, tan theta, cot theta, cos theta क्या substitute करें ताकि these are two terms will become one term. Tan और cot कर लो. Substitute x equal to tan theta so that denominator will become one term. Sec square जो उसके डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा. And you can change the limits also. Limit when x is 1, x is 0, theta would be 0. When x is 1, theta would be pi by 4. And now integrate. dx को रिप्लेस करो sec स्क्वायर थीटा से, वो कट जाएगा नीचे. लिमिट चेंज करो. sec square turn in the denominator and numerator will cancel out. नीचे भी sec square आ रहा है, काट दो. Now you integrate it, or you can apply the property if it's possible. I think now you apply the property. I है ना ये, अब apply करो. This you have done earlier, this question. After this substitution, you can apply the 0 to a wala property. This is log of 1 plus tan theta. This is sec square theta. This is sec square theta d theta. Call it equation number 1. Apply the property 0 to a, add them up and solve. You get your answer. 0 to apply कर लो. Simplify करो. हाँ. Tan pi by 4 is 1. The limit pi by 4 है ना? हाँ. pi by 2 डाल दे. A minus b, tan A minus b use करो. और क्या? This question we have done earlier. So after after applying the property, it is 8 0 to pi by 4 log 1 plus tan pi by 4 minus theta. Use identity. Don't add the moment. Use identity. Simplify, then add. This question you have already done. So it is 1 plus tan A minus B is tan A, which is 1, minus tan B over 1 plus tan A tan B. Take LCM. After taking LCM, then you add with the equation number 1. LCM ले लो, फिर add करना है. Now you can add with the equation number 1. अब ऐड कर लो 1 के साथ. तो ये वाला टर्म कट जाएगा, नीचे वाला लॉग. ये क्या किया? दिस इज पार्ट ऑफ द लॉग. So after simplification, this is 8 0 to pi by 4 log of
2 divided by 1 plus tan theta. This is equation number 2. Now you add 1 with 2. One plus 2 will give you this. Limits are same. 8 is out. This is log of 1 plus tan theta. Whereas this is log A by B is log A minus log B. This is gone. Log 2 बाहर आ गया, आंसर आ गया. So I is 4 log 2 integration 1 d theta. टू से 2 आई था ना लेफ्ट साइड में, तुम्हें ऐड लेफ्ट तो लिखती नहीं हो, सीधा 2 आई था ना लेफ्ट में. हाँ, या लिखना था ना दोनों. दिस सेम क्वेश्चन वी डिड, बट हमने सिर्फ ये किया था. 8 wasn't there. I 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta. This is pi by 4. Pi log 2. यही आ रहा है अर्शिया. Yes, sir. तुम बहुत रिलैक्स्ड हो, एग्जाम हो नहीं है तुम्हारे. सेकंड, नो सेकंड टर्म, सीधा बोर्ड. सर रिलैक्स नहीं हो, भी प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं. प्री बोर्ड अभी से. यस सर, अक्टूबर में ओहो. दो दो होंगे. लोगों के 4 होते हैं. अक्टूबर में अगर प्री बोर्ड हो, दिसंबर में क्या होगा? नवंबर दिसंबर. दिसंबर में सेकंड प्री बोर्ड, नवंबर में ब्रेक, कुछ ऐसा सा है. अच्छा, और फिर अप्रैल में फाइनल प्री बोर्ड आफ्टर बोर्ड्स. बोर्ड्स ही चलेंगे. हाफ टू 2 tan inverse x by x. और जस्ट वंडरिंग इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी. हो सकता है बिना प्रॉपर्टी के करो. बाय पार्ट्स कर सकते हैं इसमें. हाँ वही है इसको. तो दो दो डिफरेंट फंक्शंस है ना. आई थिंक tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x का, बट उसमें log आएगा. log क्या कहेंगे? करो करो, ट्राई. 1/√2 tan इनवर्स x by x. शायद देखो.
बाय पार्ट्स, हाँ वही है। फिर log x आ गया ना। इसमें क्या करोगे log x में? फिर किसको इंटीग्रेट करोगे? The derivative log x. So you want to differentiate this and integrate this. तो वापस कट जाएगा वो तो पूरा ही। सोचो, ट्राई करो क्या हो सकता है। नहीं नहीं आया, नहीं नहीं, ट्राई कर लो, हो सकता है। लिमिट्स भी तो वियर्ड है, 1/2 to 2। तो दोबारा उसमें वापसी बाय पार्ट्स लगाएंगे क्या? हाँ कर लो, हो सकता है हो जाए तो। दिस वन डे क्वेश्चन तो सही होना चाहिए ना ये। लॉस्ट द क्वेश्चन। है ना? कुछ और सोचना पड़ेगा, थिंक समथिंग एल्स। क्या करें? tan इनवर्स x बाय x है ना? हाँ मतलब तुमने जिसको पहले यू वी लिया था उसको तुमने वी यू ले उल्टा कर दिया तो वापस वही आ जाएगा। तो कुछ और सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। हम्म लेट्स ऐसे करते हैं इसको, ठीक है? आउट ऑफ द बॉक्स। tan इनवर्स एक्स को मैंने टी लिया, एक्स हुआ tan टी। तो डी एक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी डी टी, राइट? आई एम नॉट राइटिंग द लिमिट्स। दिस इज टी डिवाइडेड बाय tan t, and it is sec square t dt, right? So what you do now, you differentiate t and integrate this. हाँ, you differentiate t and you integrate v। तो सब्स्टिट्यूशन से हो ही जाएगा, इंटीग्रेशन वाला से। लिमिट बाद में डाल देंगे, तो बार बार लिमिट चेंज करना, बट लिमिट बड़ी वियर्ड आएंगी फिर। हाँ, नहीं नहीं, t को डिफरेंशिएट करो। u is the function which is differentiated, v is the function which is integrated। Differentiate t, integrate that। इसको तुम अलग से इंटीग्रेट करके देख सकते हो, बस ये log tan t हो गया ना, बिकॉज इसको t को तुम tan t यू सब्स्टिट्यूट y एंड डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। log of tan t। See, if you want to separately integrate this, it'll be like this: sec square t by tan t। हाँ, if you take tan t is equal to y, but the problem is, let's see, this would be dy by y. So log of tan t. So this integral would be t as it is, log of tan t minus derivative t is 1। हाँ हाँ no no, it's log x, not tan t is x। See, if you substitute it back in terms of t, so this is, what is t? Okay,
and this is log x, and this is log x. dt is, if I change the, no, dt is, then I need to substitute back. So let it be log t only. So this part, I let it be log of tan t. But the limit of t, what are the limits of t? T is tan inverse tan 1 by 2 and tan 2. है ना? When x is, the limits will change. कर लो आइलेट. But when you integrate one and differentiate tan log, will be the same thing. फिर फंस जाओगे उसमें, t आएगा एंड में. कुछ तो गड़बड़ है. ऑनलाइन चेक करें सर? हम्म ऑनलाइन चेक करें? चेक करो, मैं देखता हूँ उसमें क्वेश्चन में आंसर, सोल्यूशन में क्या आंसर, कहीं क्वेश्चन तो लिमिट तो चेंज नहीं है इसकी. 1 by 2 tan inverse x. कर लो. See, they have made the substitution x equal to 1 by t. करना, x को 1 by t डाल के देखो. In their method, what they're doing is, question correct है, they're substituting t x as 1 by t. Their substitution is this. So dx will be minus 1 by t square dt. And the limits will interchange, right? Because this would be 2, this would be half. So it will be tan inverse 1 by t. X is 1 by t. This is minus 1 by t square dt. So this would be minus tan inverse 1 by t dt by t. Is it fine till now? ठीक है. फिर inverse trigo में I told you this result. Tan inverse x is always cot inverse 1 by x. याद आ रहा है? Once upon a time. Sin inverse x is cosec inverse 1 by x. Cos inverse x is sec inverse 1 by x. So tan inverse 1 by t would be cot inverse. So this would be cot inverse t divided by t dt. And then remember, there was a property, interchange. If you interchange limits, then integral a to b fx dx is always minus b to a fx dx. If you interchange limits, the integral becomes negative. So I interchange the limits, half to 2 cot inverse t by t dt.
Now what? Very first property I told you. You can change variables. Yes. नहीं नहीं, t की जगह x डाल दो. If you change the variable, nothing happens to integral. जहां भी x आ रहा, t आ रहा, उसको x डाल दो. Wherever you have x, t replace it by x. हाँ. So this would be I is equal to 1 by 2 to 2 cot inverse x by x dx. ये 2 हो गया तुम्हारा. इस 2 को तुम ऐड करो 1 के साथ. और फिर अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाय 2. यूज दैट. एक और प्रॉपर्टी ना, फाइनल आंसर क्या है? वो तभी तो साइन चेंज किया मैंने नेगेटिव का. A2 ये वाली प्रॉपर्टी यूज की ना, व्हेन यू इंटरचेंज द लिमिट. यस रायन. फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर बहुत खतरनाक है. सर मेरा पाई/4 log 2 आ रहा है, ऑनलाइन पाई/2 था। एक मिनट बताता हूँ एग्जैक्ट आंसर क्या है. The final answer is option D, pi by 2 log 2. So when you add 1 and 2, after adding 1 with 2, we get 2i is equal to half to 2 tan inverse x plus cot inverse x divided by x dx. So tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. Again, another property of inverse trigo. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x pi by 2. So 2i will be equal to pi by 2. Integration of 1 by x will be log x half to 2. So 2i is equal to pi by 2 log 2 minus log half. Another property of log. Log a by b, log 1 by a is minus log a. So this would be 2 log 2. So final answer is pi by 2 log 2. This is a recent JEE question, 2023. Hmm? Hmm? Variable change. No. It's a variable change property. If you have any integral, limits a to b, fx dx, ठीक है? So you can replace by y everywhere. You can replace by z everywhere. You have to replace everywhere. उससे कोई मतलब नहीं है. मतलब पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं. हमने इसको तो रिप्लेस किया ना x से. सपोज तुम्हारा नाम आज के यहाँ पे क्या है, ठीक है? क्या हुआ, लाइट गई? इंतजार कर रहे हो तुम लोग लाइट जाने का? अब लाइट नहीं जाएगी, मना कर दिया हमने. They used to change the transformer shift.
डन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गौर से देखो, इसके लिमिट से तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं क्या करना है। 2a वाला जब लगता है जब लो लिमिट जीरो होती है, 2a वाले में और a वाले में लो लिमिट जीरो होती है, देखो हर जगह पे। फिर हो ही नहीं सकता वो। 0 to a में भी जीरो होनी चाहिए, हाँ। यस, A to B। एंड इफ यू लुक एट दैट लॉग वाला टर्म ना, सेकेंड एक्स, 6 - x का होल स्क्वायर है वो, है ना। दिस टर्म इज बेसिकली 6 - x का होल स्क्वायर, एंड a+b इज ऑल्सो 6। दिस टर्म इज like this. So you can use a+b. Wherever you have a+b -x होगा, ये -x होगा। a+b -x करना है, ठीक है। Wherever you have x, replace it by a+b -x। इसको तुम x - 6 भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज द सेम थिंग। अब डिनोमिनेटर देखो, इसका और ओरिजिनल को 1 ले लो। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो यू कैन ऐड। आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, इज द डिनोमिनेटर सेम? यहाँ पे गलती होगी ना वापस। कैसे गलती हुई है? ये क्या था? 6 - x का होल स्क्वायर था, माइनस था ये, देखो। ये x - 6 से फर्क नहीं पड़ेगा, इट बी द सेम थिंग। हाँ। सो वेर एवर यू हैव x, रिप्लेस इट बाय 2 + 4 - x। समझ में नहीं आ रहा तो आराम से पहले लिख लो। ये करना है। वेर एवर वी हैव x, उसको रिप्लेस करेंगे हम 6 - x से। wherever you have x, replace it by 6 - x. So log x की जगह 6 - x, तो 6 कट जाएगा, एंड आफ्टर दैट डिनोमिनेटर सेम आ गया। इस वो ऐड करने के बाद सेम आएगा ना।
1 हो जाएगा बस, फिर तो आ गया आंसर। उसके बाद तो इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना ये। वंस यू ऐड 1 and 2, वो कट 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 जाएगा 1, इंटीग्रेट, पुट द लिमिट, बट डोंट फॉरगेट 2i ऑन द लेफ्ट साइड। क्या रहा है आंसर? 1। 1 and 2 को ऐड कर लिया फिर, सो लेफ्ट साइड में 2i आ गया। लिमिट्स 2 to 4, न्यूमरेटर इज द सेम एज डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन में डेफिनेट के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस में। देयर विल बी मोर क्वेश्चन फ्रॉम, क्योंकि इंडेफिनेट में ये भी है ना, यू कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट ऑप्शन एंड रीच टू द आंसर। सो दे गिव मोर क्वेश्चंस ऑन डेफिनेट, यू कांट डू, ऐसा होता है। सो नेक्स्ट क्लास में वी कैन स्टार्ट विद either A or I, or we can go back to, no, not AOD. Yes, conic section, parabola and circle. AOD I've done with you. AOD मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ. If you want, I can go back to this. We can start with AOI and differential equation, 12th syllabus, और we can do 11th वाला. हमने कहाँ छोड़ा था? पैराबोला पे छोड़ा था, सर्कल पे छोड़ा था. सर्कल MCQ I'll do one in one go, सारे इकट्ठे MCQ. So whatever you guys, we'll start with conic. Let's finish 11th portion first, है ना? Okay, ending the class. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.